So in today's class, we will study about the reproduction in the cycas. Yesterday, we studied about its morphology, its anatomy, and today we will study about its reproduction. And I have already told you that in case of cycas, there is only one means of vegetative reproduction, that is through bulbils, and sexual reproduction takes place with the help of megasporophyll formation and microsporophyll formation. How does sexual reproduction takes place? There occurs formation of megasporophyll and microsporophyll, and that microsporophyll you must be already knowing that I have told you several times that in microsporophyll is the leaf axis and in which there occur formation of माइक्रोस्पोरेंजियम जो व्हाट इज द माइक्रोस्पोरोफिल जिस जहां पे माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है, that is the microsporophyll. So all those microsporophyll get arranged in the form of cone. You can see in this picture, this is the picture of a male cone. In this cone you can see there are lots of microsporophylls. They are arranged in the form of a cone, and in the axis of this cone, you may see several microsporangium. I'll show you further. And this is the microsporophyll, and these members are heterothallic. Heterothallic means dioecious, means the male plant and female plant is different. And microsporophyll, as you already know, give rise to male gametophyte, and megaspore give rise to female gametophyte, that is known as a egg. So male strobilus cone. How if you cut the section of the male strobilus, what will you see? I have told you that that male strobilus or cone, male cone is also known as a male strobilus, and that male strobilus is made up of what? That is made up of microsporophyll. And in the axis of, you see all this at the bottom, this is the longitudinal section, this is the axis, and at the periphery you can see there are several microsporophylls, and in the axis of which microsporophyll you can see microsporangium, and inside microsporangium there occur formation of microspore. So it is all about it's a male strobilus and male cone. And this is the structure of a microsporophyll. If you see a single microsporophyll, so how does it look like? एक single microsporophyll के ऊपर जो ये cap होती है, that is known as a apophysis, and it's a microsporophylls consist of so many microsporangium. ठीक है, ये सुराई जिसे कह रहे हैं. सुराई क्या है? सुराई is a group of sporangium. ये जो सुराई word you can see here, it is a group of several sporangium. So this is the vertical section of a single microsporophyll. So आपने longitudinal section of cone देखा, and if you will cut the section of vertical section, means longitudinal section of microsporophyll, then what will you see? You will see that this is the microsporophyll having several mucilage canals, and at the bottom you will see several microsporangia. आप क्या देखोगे? You will see several microsporangia, and inside microsporangia you will see several microspores. Microsporangia and microspores. So ये जो microsporangium की wall है, that is multi-layered. It has 3 layers. Outermost region is a exothecium, that is a thick walled and cutinized. Cutinized means उस पे cuticle की covering होती है. उसके बाद endothecium, and after that there is a tapetum. तो tapetum has always nutritive role. इससे पहले भी कहीं जब हम ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट पढ़ रहे थे, तो वहां भी हमने कहीं tapetum आया हुआ था. तो whenever there is a tapetum, mostly it has a nutritive role. So you can see that there are large number of microspores inside the sporangium, and these microspores are also known as a pollen grain, and they germinate and give rise to male gametophyte. And it was about that microsporangium pollen grain also has a exine and intine.
Now this is the Cycas megasporophyll. In this megasporophyll, as you have seen in the case of microsporophyll, so many microsporophyll get arranged in the form of a cone. But in case of megasporophyll, they are not arranged in the form of cone. You can see here, ये जो आपको brownish structure दिख रहे हैं और इस पे ग्रीन ग्रीन से छोटे छोटे से लगे हुए हैं फ्रूट्स. दीज आर नॉट फ्रूट्स, दीज आर द ओव्यूल सीड. आपको पता है इसमें कैसे सीड होते हैं, नेकेड काइंड. सो दीज आर ऑल सीड. एंड ये सीड कैसे डेवलप हुआ, द ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू द सीड. तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होता है दैट कन्वर्ट्स इनटू द सीड. सो दिस ग्रीन स्ट्रक्चर इज द सीड. और ये जो ब्राउनिश स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज इट्स अ मेगास्पोरोफिल, है ना. मेगास्पोरोफिल इज अ लीफ that wears megasporangium, and that megasporangium megasporangium is also known as a ovule, and inside megasporangium there occurs formation of a egg. तो यहाँ पे जो megasporophyll है that is not arranged in the form of a cone, as in case of microsporophyll you have seen कि वो microsporophyll get arranged in the form of cone. This megasporophyll is not arranged in the form of a cone, and they occur in a closed spirals. वो कैसे arrange होते हैं, spiral में, and they occur in acropetal succession. What is the meaning of acropetal succession? When anything is formed from bottom to top, मीन्स जो ग्रोथ हो रही, कोई चीज नई टॉप पे बन रही है, ओल्डर वन इज एट द बॉटम, देन this process is known as a acropetal succession. And what about basipetal succession? If something is formed from top to bottom, means base की ओर बन रहा है, then that is known as a basipetal succession. But here in this case, they are formed in the acropetal succession. New megasporophylls are formed every year. लाइक foliage leaf, जैसे हर साल foliage leaf का formation होता है, likewise there occur formation of a megasporophyll, and megasporophyll is a modified leaves, means leaves that convert into the megasporophyll. So you look, it's a very beautiful picture. You can see megasporophyll का ये structure है. You can see ovules attached here, and after maturity, starting में ये green होता है, after that it get converted into the red one. Now the LS of ovule. If you will cut the section of a ovule, longitudinal section, what parts you will see? First, let me tell you, it's ovule is a orthotropous. Orthotropous ovule में क्या होता है? When you will study about angiosperm, then there you will see different kind of ovules. Orthotropous, anatropous, amphitropous, hemitropous, circinotropous, campylotropous. You will see several kind of ovule over there. And here, in case of a cycas, the ovule is what kind? It is a orthotropous. Orthotropous में क्या होता है? This ovule is a what are the components of ovule? Ovule की एक central body होती है, that is called nucellus. देखो, this central body is the nucellus, and it is covered by wall. And वो किससे covered होता है? Wall से covered होता है. और इसमें जो वॉल होता है, दिस इज अ यूनिटेगमिक. यूनिटेगमिक मींस, यूनि मींस सिंगल, इंटेगमिक मींस इंटेगमेंट. इट हैज अ सिंगल कवरिंग, सिंगल इंटेगमेंट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ यूनिटेगमिक. तो और यहाँ पे ये देखो, दिस इज द इंटेगमेंट. ये जो स्ट्रक्चर सबसे आउटर ये स्ट्रक्चर है, दिस इज द इंटेगमेंट. एंड यहाँ पे जो ओपनिंग है, जो गैप है, दैट इज कॉल्ड, दिस पोर इज कॉल्ड, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड द माइक्रोपाइल. एंड आफ्टर दैट दिस इज द न्यूसेलस. एंड यहाँ न्यूसेलस में जो ये ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड न्यूसेलर बीक. एंड न्यूसेलर बीक, और उसके नीचे पोलन चैम्बर है. And after that there is a archegonial chamber, and there is a archegonium. यहाँ ये archegonium है, और इस archegonium के अंदर ही egg का formation होगा. तो अभी ये देखो, यहाँ पे आर्शीगोनियम, यू सी कितना आर्शीगोनियम कितना रिड्यूस हो गया है. जब हम लोग ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे थे या टेरिडोफाइट पढ़ रहे थे, वहां पे आर्शीगोनियम कैसा था, काफी डेवलप्ड था ना, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर. इट वाज अ फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर. इट हैज स्टॉक एंड बॉटम. इसके इसमें
जो था नेक कैनाल सेल थी, वेंट्रल कैनाल सेल थी, इट वाज काइंड ऑफ फ्लासिड. बट हियर इन केस ऑफ साइकस यू सी द आर्शीगोनियम इज रिड्यूस्ड वेरी मच, बिकॉज ये अब आर्शीगोनियम का जो इवोल्यूशनरी जो प्रोसेस हो रहा है, अब आर्शीगोनियम का जो है डेवलपमेंट स्टॉप हो जाएगा. नाउ द अब जब एंजियोस्पर्म पढ़ोगे तो वहां पे आर्शीगोनियम का फॉर्मेशन यू विल नॉट सी देयर ओवर देयर. सो ये लोअर प्लांट्स में आर्शीगोनियम के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. तो यहाँ पे देखो आर्शीगोनियम इज क्वाइट रिड्यूस, कितना छोटा सा है और इस आर्शीगोनियम के अंदर एग होता है. तो हाउ डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस? अब एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन देखो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर, and that microspore will germinate and give rise to male gametophyte. Male gametophyte में क्या बनेगा, male gamete बनेगा है, that male gamete or you may say sperm. अब वो male gamete आएगा यहाँ पे माइक्रोपाइल से एंटर करेगा न्यूसेलर बीक में, और यहाँ जो इसका न्यूसेलर का ये जो पोर्शन है यहाँ पे कुछ ब्रेकेज होगा, कुछ स्लाइमी सब्सटेंस यहाँ पे बनेगा, एंड दिस स्पर्म विल कम एंड इट विल स्टे इन द पोलन चैम्बर, है ना. ये यहाँ पे जो पोलन चैम्बर है न्यूसेलर बीक से होता हुआ पोलन ग्रेन पोलन चैम्बर में रेस्ट करेगा, एंड आफ्टर दैट इट विल इंटर इन द आर्शीगोनियम एंड इट विल फर्टिलाइज द एग. ये एग को फर्टिलाइज कर देगा. जब एग का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो this ovule will convert into the this entire ovule will convert into the seed. तो आप ये देखो इसके क्या क्या लेयर हैं, आप ध्यान से इसके स्ट्रक्चर देखो. आउटर फ्लैशी लेयर सार्कोटेक्स्टा, मिडिल स्टोनी लेयर स्क्लेरोटेस्टा, इनर फ्लैशी लेयर. तो ये सारे इंटेगमेंट्स के डिफरेंट सिंगल इंटेगमेंट है, बट उसमें 3 लेयर है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर. ये आर्शीगोनियल चैम्बर आर्शीगोनियम है. दिस पोर्शन इज अ न्यूसेलस एंड दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट, है ना. फीमेल गैमेटोफाइट का मतलब वही हुआ ना, आर्शीगोनियम में ही तो फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है. आर्शीगोनियम का जो पोर्शन हुआ है दैट इज यहीं पे, यहाँ दिस एंटायर पोर्शन इज द फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है. तो दैट इज इट्स एंटायर स्ट्रक्चर, और इसी को एंडोस्पर्म बोल रहे हैं जो फीमेल गैमेटोफाइट का ये जो इंटायर पोर्शन है. देखो ये आर्शीगोनियम है और ये जो पोर्शन है दैट इज द एंडोस्पर्म. सो इसमें कुछ टफ नहीं है. जो ओव्यूल है, ओव्यूल में जो सेंट्रल बॉडी होती है दैट इज कॉल्ड न्यूसेलस एंड इट्स वॉल इज कॉल्ड इंटेगमेंट. हियर इंटेगमेंट हैज अ 3 लेयर, आउटर फ्लैशी, मिडिल स्टोनी एंड इनर फ्लैशी, और उनके अलग अलग नाम है. आउटर फ्लैशी का सार्कोटेस्टा, स्क्लेरोटेस्टा, एंड इनर फ्लैशी का नाम इट इज नॉट गिवन हियर. एंड ये जो दिख रहे हैं वेन्स, ये इसकी वैस्कुलर सप्लाई है, मींस ओव्यूल को कैसे न्यूट्रिशन मिल रहा है वैस्कुलर से. और जो ओव्यूल की ओपनिंग है दैट इज अ माइक्रोपाइल, उसके नीचे जो न्यूसेलस में ओपनिंग है दैट इज अ न्यूसेलर बीक, एंड बिलो दैट देयर इज अ पोलन चैम्बर, एंड बिलो दैट देयर इज अ आर्शीगोनियल चैम्बर. मींस इन पोर्शन से होता हुआ स्पर्म आता है अंदर, आर्शीगोनियम में इसको फर्टिलाइज करता है. और जो ये एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म का काम है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग embryo and zygote. And it was about ovule. और आपको ये पता ही है कि माइक्रोस्पोर विल गिव राइज टू मेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोर टू फीमेल गैमेटोफाइट. तो इसमें पॉलिनेशन कैसे होता है? व्हाट इज द पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम मेल टू फीमेल, ठीक है. तो कैसे होता है पॉलिनेशन? न्यूसेलर बीक डिसऑर्गेनाइज एंड फॉर्म विस्कस फ्लूइड. आपको मैंने ये जो बताया, ये जो न्यूसेलस बीक है ये ब्रेक डाउन इसमें हो जाता है और ये क्या बनाता है? विस्कस फ्लूइड, ठीक है. एंड फ्लूइड ओज आउट ऑफ अ माइक्रोपाइल. अब ये जो फ्लूइड निकलता है वो माइक्रोपाइल से बाहर ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलने लगता है. ये डिसइंटीग्रेट होगा एंड द फ्लूइड विल कम आउट ऑफ माइक्रोपाइल एज अ ड्रॉप, जिसे क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन ड्रॉप, ठीक है. तो इसमें जो पॉलिनेशन का मेथड है उसे कभी कभी ड्रॉप मैकेनिज्म भी कहते हैं. एंड द माइक्रोस्पोर्स इंटैंगल इन पॉलिनेशन ड्रॉप. अब वो माइक्रोस्पोर जो है वो उसी ड्रॉप में इंटैंगल हो जाते हैं एंड दैट पॉलिनेशन ड्रॉप ड्राइज
माइक्रोस्पोर सक्ड इन माइक्रोपाइलर कैनाल। अब जब माइक्रोस्पोर यहाँ पे ड्राई हो जाते हैं तो ये जो माइक्रोपाइलर कैनाल है वो इसमें सक हो जाते हैं एंड दे एंटर इनसाइड द female gametophyte. After pollination, ovule increases in size, unpollinated ovules dry and wither away. So it was all about pollination. And फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर जो कि मैंने अभी बताया, डेवलप्स फ्रॉम फंक्शनल मेगास्पोर इन ओव्यूल एंड देखो फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इट विल बी फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल, ठीक है। और हर ओव्यूल में 2 से 8 आर्शिगोनिया होंगे। जैसे आपको ये जो ओव्यूल दिख रहा है इसमें कितने आर्शिगोनिया है, 1 and 2 आर्शिगोनिया है। Okay, and mature archegonium has a 2 to 4 neck cells, 1 egg, archegonial jacket around the venter। मीन्स ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, आपने हमने जैसा पहले ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में देखा था उससे ये काफी रिड्यूस्ड है, ठीक है। The nuclear tissue above archegonial initial disintegrate to form archegonial chamber, ठीक है। तो अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन है कि जब पॉलन ग्रेन पहुंच गया वहां पे पॉलन ट्यूब, तो फर्टिलाइजेशन करेगा ही। तो फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा, दैट जाइगोट विल कन्वर्ट इनटू द एम्ब्रियो एंड दैट एम्ब्रियो विल फर्दर फॉर्म द मेन प्लांट बॉडी। तो इट वाज ऑल अबाउट इट्स लाइफ साइकिल। ये देख लो आपको, ये इसके जो ओव्यूल्स हैं और ये इसका सीड है। मैं आप लोगों में से किसी ने देखा होगा अगर कहीं साइकस का प्लांट होगा, मैंने तो खूब देखा है इसको एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड जब आप सीड का सेक्शन कट करोगे तो यू विल सी दिस लेयर्स, जैसे आपको सीड के सेक्शन में वही लेयर दिखेंगे जो ओव्यूल के सेक्शन में। जैसे आपने, क्योंकि ओव्यूल ही सीड में कन्वर्ट होता है, तो जैसे ओव्यूल में आपको 3 लेयर दिखे थे, उसी तरीके से सीड में भी 3 लेयर मिलेंगे, आउटर फ्लेसी, मिडिल स्टोनी एंड इनर फ्लेसी। और ये एंडोस्पर्म है और ये कॉटिलेडन है, ठीक है। तो ये बिल्कुल, ये जो ओव्यूल का आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये ओव्यूल ही तो कन्वर्ट होता है सीड में, तो ये जो 3 लेयर हैं वो उसमें भी होंगे, ये जो एंडोस्पर्म है उसमें भी होगा, ये सारी चीजें होंगी। बस वहां पे क्या होगा कि वहां पे जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा, जो फीमेल गैमेट है वो फर्टिलाइज हो जाएगी मेल गैमेट से, उससे जाइगोट बनेगा और फिर एम्ब्रियो बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये जो ये सीड दिख रहा है उसमें आपको इस तरीके से ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का ये सस्पेंसर है और इसमें 2 कॉटिलेडन है। तो इट वाज ऑल अबाउट साइकस टुडे। और फिर सीड जर्मिनेट करेगा और फिर नया प्लांट बॉडी बनेगा, दैट्स इट। सो इट वाज अबाउट द लाइफ, अबाउट साइकस। ओके, किसी को कोई डाउट है इसमें?